Hello students, in next 5 to 10 minutes we will see how to create front end in Django using class based view. वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन I promise you will completely develop full stack application in backend as well as front end. So what is the output when I run my code? This is my output. Here I can add the articles. You can see already existing article here, title, content preview and actions. Here I can edit, delete. So let us add the article. Suppose I create an article for HTML and new HTML article. When I click on this, I get new HTML article. Okay, this is the front end and this is the back end. This is the back end of Java. If I refresh this page, you can see this HTML also got added. I don't understand. This is the back end of the project. This is the front end of the project. In this project, in this video, I will teach you both back end, front end, how to create the project, how to create the environment, activate it, and write the code, complete code. So be there. Video लंबा होगा लेकिन I promise you will learn this. Okay, so how to do it? उसके लिए क्या करना है? So again I just show the demo. When I click on edit, this edit here HTML edited. When I click on save, you can see HTML edited there. Or if I refresh the page, you can see HTML edited. Okay, and suppose I delete this. Suppose I delete from front end here, back end. I delete this HTML edited. I click on delete selected. This is the back end of Django. Okay, I just click on delete selected article. Now HTML get deleted. Now there is no HTML. If you see here, if I refresh the page, so here whatever change I make in back end are reflected in the front end. Whatever changes I make in front end that reflected in back end. So how to do this project? Okay, same thing I can do here. I can add article in back end also. Add article. Suppose I add the article for SaaS model. SaaS model. Okay, welcome to new program. When I click on save, you can see here I can sort by column. I can sort by content. I can sort by column. I can sort by date. Here I can search. Suppose I want to search Java. When I click on Java, you see Java code. Or suppose I want to search by code. When I click on this search code, CODE, I get this. Means what? I can search by any column here. Okay, how to do it? I will also tell it. Don't worry. So let us dive into the code. For that, already I have created a prompt. Let us follow the prompt one by one. Okay, so what step I will follow? I just show you the steps that you are going to follow. First, create one directory, change the directory, create the environment in Windows. For Linux, this is the script. Activate the environment. Once you activate the environment, for Windows, this is the script. For Linux, this is the script. Once you activate the environment, install django and create the project using this command. Create the app using this command. Go to setting.py. Now register this blog app in setting.py. Next, create a template folder under the app folder where you will save all your HTML file. And Python manage.py make migrations. Migrate, createsuperuser, runserver, and afterwards 127.0.0.0.1. When I type this 127.0.0.0.1, you get window like this. Okay, like this. And if you want to go to backend, click on /admin. Okay, when I click on /admin, here I get this username. Okay, I get this. This is the back end of the project where I can do these operations. I can sort, search, and this is the front end of the application. So now the question is how to do it. For that, let us dive into the code. The first step that I will do is create the project. The prompt already I have given to create the project. This is the prompt. Okay, open your command prompt cmd. Open your command prompt.
I just rearrange the window and make directory myblog. You are currently under user head. Make directory myblog. Okay, I again rearrange this window also. Okay, great. Okay, it's great. Okay, great. Also, what I do, I also open one editor. C current folder is, sorry, my current folder is C. This is the C user. This is my current folder. Okay, here whatever steps will follow, I will show the respective changes here also. Okay, don't get confused. Okay, chalo. So first step is create the environment. So okay, first step, make directory myblog. I just go here, Control V. What I do here, myblog, I type here underscore 100 myblog, or 1000 or 10,000. Okay, now what will happen when I write this? You can see here I will get one folder of name 1000. Let us check this folder. I arrange by type, and here if you see the folder got created of name 1000. Okay, can you see this folder? Okay, currently there is no content, so I change directory myblog 123. So what I do, cd 123. I am going to explain everything in detail. Video थोड़ा लंबा होगा लेकिन, but I promise you will learn, and I will share this code on GitHub. Don't worry. Change directory. Okay. What is the next step? Create the virtual environment. The command is python make virtual environment env. Okay. You can give any name, like I give env 1000. Press here 10,000. Press enter. Now it will create virtual environment. Now you can see under this folder virtual environment got created. Okay, and under this virtual environment, if you double click this, you will see the command script, and under the script you will see activate. So for Windows you have to run this command, virtual environment script activate. Here my virtual environment name is venv 10,000. So what is my next step? venv 10,000. Okay, my next step is venv, okay, 10,000 slash script slash activate. Try to understand this. Under this environment there is a folder of name script, capital S is there, you can see capital S. Okay, and under the script activate. Now when I run this code, environment got activated. For Linux, follow this command. If you are using Linux, use this command, environment slash bin slash activate. Next is install django. What is the next step? Pip install django. Press enter. When I click on pip install django, enter. Now in this environment your Django will be installed here. Okay, so let us wait for some time. Here your Django will be installed. Now once your Django will be installed, what is my next step? My next step is create the project using this command, django-admin start project. Remember, these are the keywords: your project name, current folder, and create the app using this command. Okay, so, wow, Django got installed. Now under this environment, Django got installed. Next step is create the project, django-admin start project, project name. Okay, what I do here, I just put here django-admin blog, my blog 10,000. Now what happened? You can see this folder got created. Try to understand this. This folder got created, and under this folder there is a folder of name setting.py. Are you getting me or not? When I run this command, django-admin start project, I just minimize it. Okay, what happened when I run this command? This folder got created, and under this folder there is a file of name setting.py, UI.py. We need both file for our project. What is the next step? Now python manage.py startapp blog.
Okay, I just click here. Currently I am under this folder. Okay, what is the path? My C user head myblog 10,000. You can just check C user head myblog 10,000. Okay, now I run this command, Control V, blog 10,000. Now what will happen? Here a folder of name blog got created, and under this folder you have model.py and admin.py. Okay, so if you see here, I can see here title, content. So that schema you have to define in model.py, and you have to register in admin.py, and you have to call urls.py. Here you have to create one more file of name url.py, and that url.py will be under your url.py. So let us go one by one. Don't get confused. I am here to clear every concept in detail. Okay, so once we do this, what is my next step? What is my next step is create a folder of name blog templates. Under this folder, make dir directory blog my. Okay, so what I do here, python manage.py. Okay, just create this template. Next step is python manage.py make migration, migrate, create super user, and run server. That's it, and just run this. Okay, your admin board get created here. This admin already I have created. I have followed everything here, and this is my code, ready code in VS Code. Just check this. Don't get confused here. I just show it to you one more time. Don't get confused. Okay, whatever thing I have shown here, same thing you can see here. You can see my blog 10,000 here. My blog is yes. This is the folder. Under this folder you can see there is a virtual environment folder is there. There virtual environment folder is there. There is a blog folder is there. There blog folder is there, and there is my blog folder is there. There is my blog folder is there. Okay, so already whatever steps I have discussed here, already I have done these steps. Video will be very lengthy. That's why already I have followed this. Let us go one by one and see what happened inside the URL. Okay, so are you ready and excited? Let us run the code. So when I run this code, this is the, okay, this is my code. What happened? When I run this code, this is my urls.py. Okay, this is my model.py, title, content, created, updated. So what you have to do, your first step is go to your app. This is the app name, blog. Go to your app model.py and write this code. Okay, class article. Okay, from django.database import model, from django.urls import reverse, and write this code, class article model.article. Okay, and title, content. So these are two fields that I am adding here, and by default ordering is on created. Means when I run the code, record gets sorted on created column. There are 4 columns: title, content, created, updated. And when I run the code, record will be sorted on created. First step. Second step, go to your admin.py and register this model. Okay, from dot model import article. What is article? This is the article, class article. Whatever name you are given here, write down the same name here, import article. From dot, this is the model, file name is model. That's why from dot models, means from this file model. Okay, import article. So from dot models file, import article, means now this article will be imported. Great. Next step is what is the next step? Admin.register article, and afterwards write this command, class article admin.article model admin. Here we have to import this. Okay, and list display, what I want to display, title, content, created, and search field is title, content. So if you remember the syntax, when I run the code, when I run the code, what did I get? If you see, when I run the code, what do I get? I just rearrange the window and see the code. When I run the code, what do I get? Articles. I am getting here title, content, created. So how do I get this? Just check this. Title, content, created,
title content created, list display title content created, and by default search. Okay, and next is search field title content. Means what? When I have searched this, suppose I search django, dja. So what happened here? I got django. So here search happen on title, search field on title, or here when I click on title, suppose this is the BSS, I search BSS. When I click on this, now search happen on the content. So search happen on the content. So whatever field you give here, that search happens. And list display here, suppose what I do, suppose I remove this created, what will happen? See, I search, I save it. Now here if I refresh this, you will see this created will disappear. See, created got disappeared. Are you getting me or not? Created got disappeared. So in this way, or I suppose I remove this content also, content here. So content will be disappeared. Content will be disappeared. Just refresh this and check this. You see only, okay, Balaji 1 2 3 4 5 6. Okay, Shetty @ 1 2 3 4. Great. Okay, Shetty @ 1 2 3 4. Pause. So here we have again restored the code. You can again see the different variations. So what do we do now? Let us jump back to our code. Okay, I'm jumping back to your code. This is the model.py. Okay, I'm just closing this. Okay, I'm just admin.py. Okay, so what happened actually? Let us see what happened actually when we run the code. Let us go to our main project. This is my main project, urls.py. When I go to url.py, just check there are two folders, admin and blank. So when I run the code, if you see, when I run the code, I have two URL, 127.0.0.1. Okay, this is the one URL. Okay, this is one URL admin. Okay, this is one URL admin, and second URL is blank space. Mean here if I do not enter anything, I get this window. Okay, so when I click on admin, it is going to the backend. When I do not use admin, it is going to the front end. Try to understand this. And when I go do this, it is calling blog.urls. What is this blog? This blog.url, I have defined this blog.url. This is the blog, app name is blog. Under that blog, I have created a folder of name url.py. Are you getting me or not? Blog, under the blog, there is a file of name url.py. That's why here under my project folder, main project folder, try to understand this. This is my main project folder. There is url.py. Under this file, I have included blog.urls. Great. So you have to write this line by opening this. And what is the second step? Go to your blog and create a file of name urls.py. Okay, I'm not creating it. Okay, I just created one. Okay, and again I delete it so that I should not get confused. Okay, afterwards, what is happening? See here, afterwards, when I run this code, try to understand this. When I run this code, what is happening? I get this window, welcome to Dr. Shetty Balaji channel, learn Django class base view. I get this form and I get all the data in this database, in the backend. So how the thing happens? Let us switch to our code. How the thing happen? Okay, how the thing happen? Let us switch to our code. Okay, so when I call this 127.0.0.1, I am calling views.dashboard. Views.dashboard means what? There is a file of name views.py under the block. You can see this views.py. Okay, I just do one thing. I just arrange here the window. Okay, under this views.py file, try to understand this. Views.dashboard. I jump to dashboard. Here we have defined one function of name dashboard request. Okay,
And if you see from dot models import articles, means what? This is the from model import article. This is the app name article. So we have imported the article, then use this line, okay, import render. And when I call this, what happened? I get one dashboard. So what is the code in background? Try to understand. I am getting this dashboard. So here there are two ways. See, either I am submitting the data. See here, this is the post. This is the post, means I am creating, suppose, new data. So here title is, suppose, nutrition, okay, and welcome to nutrition. So what happened here? This is the, I am adding new record. Try to understand. I am adding new record. So here this if request.method equal to post. Okay, so this means when I click on this, this is the post method, and here this request.post title and content, this post title and this content will be added in this table, okay, in this table if I click on submit. And what if I do not click on submit? Means what? When I click on this, I am getting this data from backend, So here if there is not post article, then it will call this function. Which function? Dashboard.html. Now this file get called. This file get called dashboard.article, and this article is equal to article. Let us jump to article.article, and when I call this, if you see, articles equal to article.objects.all order by created. Here all the record in backend here will be processed. Try to understand, will be processed in this article variable, okay, and I am passing these here as a dictionary to these articles, and I am calling this dashboard.html. So where do I define dashboard.html? If you remember this, we have created a folder of name templates. Under this templates you can see dashboard.html. So when I click on this, you can see here the same code, title learn full stack development django, and here you can see my name, welcome to Dr. Balaji Shetty channel, learn django. You will see the same thing here. See, learn full stack development. This is the learn full stack development. This is the title, learn full stack development, and here you see welcome to Dr. Balaji Shetty channel, okay. Learn django class based view, means what? Suppose I make the changes 1 2 3 dash, and here I write here hi star. Now what will happen? You can see immediate changes here. Hi star, hi star, okay. And second is, here I have created title of the page 1 2 3 learn full stack development. Here 1 2 3 learn full stack development. Clear? So here this is the CSS I use. I will not explain CSS here. And this is the head, okay. This is the head tag, and under the body tag, this is the body tag. Under the body tag, what I do? Try to understand this. When I call this views.py, I have got all the record from the backend in the articles, and I have passed that articles to these articles. Don't get confused, okay? These articles to these articles. So these articles will be used here, okay? So here form method equal to post. So initially when I run the code, I am getting the form. This is the form. Form method equal to post, okay. Here it do the validation, and input type text title, and placeholder enter title, and here name equal to content text area, and you see here write content.
So I get this form. Again I show it to you. When I run this code, I get this form. See here, enter title, enter content, enter title. So how do I get this? Here enter title, enter content, and here this is the type is text box, input type go to text box, here input type go to text area. Clear हो गया? Okay, suppose I make the changes here. Enter title star star star, enter content 1 2. Now what will happen? It will be reflected here. That's it. Clear हो गया? समझ में आया? उसके बाद क्या होगा? Add article, add article. Suppose I add article, add new article. This is the button. This is the button. This is the button. Type equal to submit. Okay, I just save it. You just see the changes. Now button got changed. Add new article. Clear हो गया? बस. So this will be submitted, and afterwards you can see this record all articles. You just come here all articles. I make it all article star star star. I just make the changes and just see all articles star star star. Now here you see this is a table. This is a table. Table head. Table head consists of hash. You see hash. Okay. You see hash. Then title. You see title. Then you see content preview. Content preview. Then you see created. You see created. You see actions. You see actions. Afterwards, there are 2 more buttons. If you see this, I just modify it. In that action, edit and delete. Okay, edit and delete. Clear हो गया? चलो. This is table header. Suppose I make title 1 2, content preview 1 2, created 1 2, actions 2 2. What will happen now? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, change होगा, कुछ नहीं होगा. देखो. Clear हो गया? I hope. Now we have to display this data. SaaS model ये पूरा ये कहाँ जाएगा भाई? Here this is the table head. यहाँ पर क्या होगा भाई? Table head खत्म हो चुका है. ठीक है? अभी यहाँ पर आएगा table body. Table body. Ending table body. Ending table body. और यहाँ पर जो है I'm going to display the data. ये पर मुझे display होगा. कैसे होगा भाई? So here if you see the data here I just here in the window for A in articles. ये आर्टिकल कहाँ से आया? ये आर्टिकल कहाँ से आया? यहाँ पर मैंने जो नाम दिया था आर्टिकल्स, यहाँ पर आप जो नाम देंगे व्हाट एवर नेम यू विल गिव हियर, गिव द सेम नेम हियर. मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पर आर्टिकल्स 333 करता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या आएगा भाई? आर्टिकल्स 333. ठीक है? जो मुझे अभी नहीं करना है, कोड वरना गलत हो सकता है, तो आप जो भी चेंज कर रहे हो आप यहाँ पर कर सकते हो. क्लियर है? ओके. फिर क्या आएगा? अगर आप देखेंगे तो फिर क्या आएगा यहाँ पर? आई जस्ट हियर इन द विंडो टेबल डेटा आएगा फॉर लूप डॉट काउंटर. फॉर लूप डॉट काउंटर. अभी क्या होगा? इसमें जितना भी डेटा है वो जो है डेटा यहाँ पर आपका आ जाएगा. कहाँ पर आ जाएगा? टेबल डेटा में आ जाएगा, लूप में आ जाएगा. और उसके बाद आप देख सकते हैं, यू जस्ट चेक इट. अगर आप कोड देखेंगे तो यहाँ पर है एडिट बटन आएगा. ये देखिए, कैन यू सी दिस? क्लास टाइटल ए डॉट टाइटल. उसके बाद क्या है भाई? ए डॉट कंटेंट. उसके बाद क्या है? ए डॉट क्रिएटेड. ये क्या है? व्हाट इज दिस? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ए डॉट टाइटल क्या है? इफ यू रिमेंबर दिस कोड, दिस इज द टाइटल, दिस इज द कंटेंट, क्रिएटेड. अब यहाँ पर जो नाम आएगा वही नाम आपका यहाँ पर आ रहा है. क्लियर है? यस और नो? क्लियर हो गया? ए डॉट टाइटल, सॉरी. उसके बाद क्या आएगा भाई? ए डॉट कंटेंट, ए डॉट क्रिएटेड. समझ में आया? और ये फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट, डेट मत दिया. और आप देखेंगे टेबल डेटा में जैसे एच ग्रेप, आर्टिकल डिटेल, एपीके, ये कहाँ से आया पता है क्या आपको? इफ यू रिमेंबर दिस, व्हेन आई क्रिएटेड model.py, आर्टिकल डिटेल्स, आप यहाँ पर जाएंगे ना, आर्टिकल डिटेल्स, आर्टिकल डिटेल, इट इज पासिंग प्राइमरी की. तो ये कॉल हो रहा है और यहाँ पर आपको उसका डेटा मिल रहा है. ठीक है? तो ये देखिए आ गया यहाँ पर. क्लियर हो गया भाई? दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग हाइपरलिंक. यहाँ पर जो आप हाइपरलिंक मिलेगा, दोस्त हाइपरलिंक मिला है यहाँ पर. कैन यू सी दिस हाइपरलिंक? django, वी आर गेटिंग दिस रिकॉर्ड. क्लियर है नहीं? हाउ डू आई गेट दिस रिकॉर्ड? यूजिंग दिस हाइपरलिंक. क्लियर हो गया? यस, आई एम पासिंग a.pk प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट आई एम पासिंग. ठीक है? उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद है
एडिट और डिलीट बटन। क्लियर हो गया? ये आपका डेट आ गया 6 नवंबर 2025, डेट मंथ ईयर ये फॉर्मेट में है, डेट 6 नवंबर 2025 ये फॉर्मेट आ गया। उसके बाद एडिट और डिलीट बटन है, ये देखिए href एडिट और href डिलीट। मैं आपको एक क्लियर होता है, एडिट 1 2 डिलीट 3 4, आपको थोड़ा कंफर्म हो जाएगा। आई मेक द चेंजेस, सी व्हाट हैपन। एडिट 1 2 डिलीट 3 4 क्लियर हो गया। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ व्हाट हैपन, आई एम कॉलिंग यूआरएल आर्टिकल एडिट, आई एम कॉलिंग यूआरएल आर्टिकल डिलीट। ये कहाँ से आ गया पता है आपको? रिमेंबर दिस, ये कहाँ से आया? ये मैं आपको जस्ट चेक दिस, व्हेन आई क्लिक ऑन एडिट बटन जस्ट चेक इट व्हाट हैपन। व्हेन आई क्लिक ऑन एडिट बटन एडिट व्हाट हैपन हियर, जस्ट चेक दिस यूआरएल आर्टिकल 14 एडिट, सी दिस। या फिर जब मैं आपको यहाँ पर डिलीट करता हूँ, ओके आर्टिकल 14 डिलीट, अरे रिमेंबर नॉट, ये क्या प्रॉब्लम पता है? आर्टिकल जब मैं एडिट करता हूँ तो ये यूआरएल आ रहा है, जब डिलीट करता हूँ तो ये यूआरएल, मतलब क्या, आई नीड दैट प्राइमरी की ऑफ दैट रिकॉर्ड। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे क्या करना है भाई, मैं डिलीट नहीं करता हूँ, उसके लिए मुझे जो है प्राइमरी a.pk अंडरस्टैंड। और आप अगर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाइए आप, हियर इफ यू सी दिस ul.py में आप यहाँ पर देखिए आर्टिकल एडिट आर्टिकल डिलीट, यहाँ पर जो नाम डिफाइन किया है वही नाम यहाँ पर यूज किया है, टाटा अंडरस्टैंड। आर्टिकल एडिट मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर आर्टिकल एडिट 1 2 करता हूँ, समझ में नहीं आया? सॉरी यहाँ पर नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं अगर आर्टिकल एडिट 1 2 करता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ क्या करना होगा, आर्टिकल एडिट, ये जो मैंने अभी बनाया आपको दिखाया, यहाँ पर एडिट 1 2 करना पड़ेगा। समझ में आया? यस और नो? तो नहीं करूँगा मैं अभी, आई विल नॉट डू इट, बट रिमेंबर दिस, यू हैव टू फॉलो दिस कन्वेंशंस, ठीक है? चलो, तो व्हेन आई कॉल दिस आर्टिकल इट विल एडिट द आर्टिकल and it will call views.articleEdit, and it will call, when I delete the article, it will call views.delete article. Let us jump to views.edit. Now see, we have covered now dashboard. समझ में आया? Again I repeat, जब मैं यहाँ पर एंटर मारा तो क्या है भाई, पूरा डैशबोर्ड है। तो इनिशियली क्या है, इफ यू रिमेंबर दिस, आई गॉट दिस फॉर्म, आई गॉट द फॉर्म, अगर पोस्ट नहीं रहेगा देन क्या होगा, तो इट कॉल dashboard.html। dashboard.html क्या कर रहा है, इट इज शोइंग द फॉर्म, ये आपको यहाँ पर फॉर्म दिखा है, क्लियर है, ये फॉर्म दिखा है। और फॉर्म दिखाने के बाद आई एम पासिंग ऑल द डेटा इन दिस ऑब्जेक्ट हियर। ये डेटा यहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर डेटा आ रहा है, सी दिस, यहाँ पर वो डेटा आ रहा है, आई एम डिस्प्लेइंग दिस इन दिस रिकॉर्ड, दैट्स इट। सो आई एक्सप्लेन दिस। अगर नहीं, अगर कुछ नहीं रहेगा तो initially you will get the record no article here. If I delete all the records you will get this message no article। अगर empty रहेगा तो, अगर empty रहेगा तो ठीक है, ये लूप चलता रहेगा जब तक कि पूरे रिकॉर्ड नहीं आए। दैट्स व्हाई हियर आई गेट ऑल द रिकॉर्ड। मतलब क्या, जैसे मैं कुछ ऐड करता हूँ, यहाँ पर कुछ भी ऐड करता हूँ तो क्या होगा, ये यहाँ पर आ रहा है सीरीज, तो क्या बोल रहा है, दिस द लूप, पूरे रिकॉर्ड फिनिश कर रहा है, ठीक है। अभी मैं इस पर क्या करता हूँ, क्लिक ऑन एडिट हियर शेट्टी सर, अभी क्या हो गया, आर्टिकल गॉट एडिटेड, अपडेटेड एडिटर, और डिलीट करना है तो अभी देखेंगे एडिट क्या है। यहाँ पर जाइए, जस्ट कम हियर, यहाँ पर आ जाइए आप और आर्टिकल एडिट में जाकर, सी आर्टिकल एडिट में जाना है। आई हैव पास माय प्राइमरी की, इफ यू रिमेंबर दिस आई कैन शो इट व्हेन वी एडिट द आर्टिकल। आपको यहाँ पर ऐसा मिला है यूआरएल में, ओके। डिलीट में भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, प्राइमरी की मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आने के बाद यू गेट प्राइमरी की, सिंपली रन दिस कमांड। अब क्या करना है एडिट के लिए, जब आप एडिट करते हो तो जस्ट चेक आर्टिकल एग्जिस्ट है क्या नहीं, गेट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस आर्टिकल। यह जो प्राइमरी की हमने पास किया है वो यहाँ पर सर्च करता है, जैसे उसको आर्टिकल मिलता है। अगर आर्टिकल मिलता है, वंस आई गेट द आर्टिकल, अगर मुझे आर्टिकल मिलता है, ठीक है, एडिट करने के बाद, तो
वो चेक करेगा और उसके बाद मैं जो भी चेंज करेगा वो पोस्ट मेथड में जाके वो चेंज होगा। समझ में आया? और इट विल बी सेव। दैट्स व्हाई हियर अगर आपने देखा है जब मैं यहाँ पर आर्टिकल एडिट किया था, व्हेन आई एडिटेड द आर्टिकल, मैं इसको फिर से शेट्टी सर ओके AGGS कॉलेज, अभी क्या हुआ? इफ यू सी अभी क्या हुआ? इफ यू सी तो ये पोस्ट कॉल हुआ और ये जो नया वैल्यू है AGS कॉलेज जो भी मैंने सेव किया वो सेव हो चुका है, ये सेव हो चुका है। उसके बाद इमीडिएटली आई एम गेटिंग ऑल दैट, क्यों? क्योंकि ये रीडायरेक्ट कर रहा है डैशबोर्ड को। इट इज गोइंग टू द रीडायरेक्ट टू डैशबोर्ड। डैशबोर्ड मतलब क्या है? इफ यू सी द url.py, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज नेम डैशबोर्ड। ये इसको कॉल कर रहा है, जैसे ये इसको कॉल करेगा ये यहाँ पर जा रहा है ब्लैंक में, यहाँ से फिर कहाँ पर जाएगा? वो dashboard.html में जाएगा और ये पूरा यहाँ पर फिर से एक बार फॉर्म दिखाएगा। यू कैन सी दिस फॉर्म। मतलब क्या है? एडिट करने के बाद, जैसे मैंने बोला एडिट करने के बाद क्या हो रहा है? एडिट तो हो रहा है, एडिट करने के बाद ये फॉर्म आ रहा है और सब आर्टिकल दिख रहा है। ये कैसे हो गया भाई? टाटा अंडरस्टैंड। ये कैसे हो गया? जैसे मैं एडिट कर रहा हूँ आर्टिकल, द मोमेंट आई एडिट द आर्टिकल ओके आई एम सेविंग द आर्टिकल, जैसा सेव होता है मैं डैशबोर्ड को रीडायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे डैशबोर्ड को रीडायरेक्ट करूँगा तो क्या होगा? आई विल गेट ऑल द रिकॉर्ड। और शुरुआत में अगर वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है तो क्या होगा? फॉर्म आएगा आर्टिकल फॉर्म.html, आर्टिकल फॉर्म.html। तो ये मैंने कहाँ डिफाइन किया? आर्टिकल फॉर्म.html, यू गो टू टेम्पलेट आर्टिकल फॉर्म.html, दिस इज द फॉर्म। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज द फॉर्म ओके। वैल्यू आर्टिकल डॉट टाइटल, आर्टिकल डॉट कंटेंट। मतलब क्या है? जो मैं यहाँ पर एडिट कर रहा हूँ उसका डेटा मुझे यहाँ मिल रहा है भाई। आप समझ रहे मेरी बात? अभी देखो सी प्रोग्राम को मैं एडिट कर रहा हूँ तो इसका डेटा मुझे यहाँ मिल रहा है। ये कहाँ से आया भाई? ये कहाँ से आया? ये आया मुझे इस फॉर्म से। यहाँ पर देखिए आई गो टू views.py, यहाँ पर जैसे एडिट करूँगा मुझे तो एक्चुअली आई गेट दिस आर्टिकल और उसके बाद आई एम डिस्प्लेइंग दैट आर्टिकल इन दिस फॉर्म। फॉर्म आने के बाद वो फॉर्म यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है और इसके बाद जो भी मैं यहाँ पर चेंज करूँगा ठीक है वो सेव हो रहा है। तब मेरा ये पोस्ट मेथड कॉल होगा, ये जो मैंने सेव किया ये सेव होगा और फिर डैशबोर्ड में जाके रिडायरेक्ट होगा और फिर से मुझे पूरे रिकॉर्ड दिख जाएंगे। क्लियर है? यस और नो? सिंपल है। सेम फॉर डिलीट, सेम फॉर आर्टिकल डिलीट। मतलब क्या? जब मैं इसको अभी PPP को डिलीट करता हूँ तो क्या होगा? डिलीट डिलीट दिस आर्टिकल। तो देखो आप व्हेन आई क्लिक ऑन डिलीट सो व्हाट आई गेट, यहाँ पर जाता हूँ मैं, व्हेन आई डिलीट द आर्टिकल तो क्या पर आ रहा है? ये जस्ट चेक इट रिट्राइव द आर्टिकल। ये देखो क्या हुआ? इट रिट्राइव द आर्टिकल। ये कंफर्म करता है भाई रिकॉर्ड है क्या नहीं। अगर रहेगा तो पूछ रहा है कि भाई कंफर्म डिलीट करना है क्या। ठीक है, इसको मिल गया ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये जाएगा आर्टिकल कन्फर्म डिलीट डॉट HTML पे जा रहा है, आर्टिकल कन्फर्म डिलीट डॉट HTML पे जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है? डिलीट करना है तुमको कन्फर्म। ये देखो ये डू यू वांट टू डिलीट। ठीक है, ये देखो डिलीट डू यू ओके मैंने सेव नहीं किया सॉरी डिलीट। सो व्हाट यू गेट हियर? आई थिंक चेंजेस नाउ आर नॉट गेटिंग सेव्ड। ओके ये हेडिंग आ रहा है हेडलाइन 10 में। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके डू यू वांट टू डिलीट दिस सास मॉडल? ये देखिए यहाँ पर आ गया डू यू वांट टू डिलीट दिस सास मॉडल। क्लियर है? ये पूछ रहा है भाई डिलीट करना है नहीं करना। अगर यस अगर मैं करता हूँ, अगर मैं यस करता हूँ तो ये आर्टिकल डिलीट हो चुका है। तो ये जो फॉर्म का डेटा है यहाँ पर इस तरह से सबमिट हो चुका है। यस डिलीट जैसे बटन कॉल होगा तो फिर वो आर्टिकल डिलीट हो जाएगा। अगेन इट विल कॉल द डैशबोर्ड यू सी ऑल द रिकॉर्ड अगेन। मीन्स डिलीट होने के बाद ये डैशबोर्ड फिर से कॉल हो रहा है। क्लियर है? यस और नो? तो हियर व्हाट वी हैव सीन use.py में हमने डिलीट किया है, हमने एडिट किया है। और डिटेल मतलब क्या है? ये डिटेल आर्टिकल जो था ना, ये आर्टिकल डिटेल मतलब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ आई एम डिलीटिंग, आई एम जस्ट कॉलिंग दिस डिटेल। सो हियर आर्टिकल डिटेल यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो आई गेट दिस आर्टिकल हियर इन द आर्टिकल एंड आई एम पासिंग दैट आर्टिकल हियर। तो ये आर्टिकल इसको पास हो रहा है
और आर्टिकल डिटेल फाइल कॉल होगा, आर्टिकल डिटेल फाइल डॉट कॉल होगा, और उसमें मैंने जो भी लिखा है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। देखिए 6 नवंबर 2025 ईयर, टाइटल, और यू कैन राइट हियर टाइटल, ओके, देन here created, control S. Now if you refresh this page, see created, okay, title, sorry for the spelling mistake. तो ये फाइल कॉल हो रहा है आर्टिकल डिटेल, और जैसे मैं इस पर ये करूँगा तो बैक में तो क्या है URL, ये देखिए बैक, जैसे मैं बैक पर क्लिक करूँगा तो इट विल कॉल डैशबोर्ड, URL डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड कहाँ से है, फिर से मैं बोलता हूँ, जब मैंने डैशबोर्ड तैयार किया तो ये जो नाम मैंने दिया है दैट आई कैन यूज इन द URL डैशबोर्ड, URL डैशबोर्ड। तो ये कॉल हो रहा है, जैसे मैं बैक पे क्लिक करता हूँ इट शो दिस। सो इन दिस वे आई हैव एक्सप्लेन क्लास बेस्ड व्यू इन विच यू आर नॉट, आप कुछ भी नहीं करें, आप मेरी बात समझिए। ये जो views.py है इसमें क्या है, सिर्फ दो लाइन का कोड है। मतलब क्या है, ये देखिए डिटेल में ये डिटेल दिखा रहा है, ठीक है, फिर इसमें क्या हो रहा है, एडिट में ये एडिट कर रहा है, डिलीट में ये डिलीट कर रहा है, ओके। सो वी हैव डन ऑल द स्टेप्स हियर, आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, and you will see all the code on GitHub link. Don't worry, I have already created all the code in my GitHub link. I just show it to you. ये मेरा GitHub का link है. You just go to this class based view, and in this code you will see my blog as zip. You download the source code. आप source code download कीजिए. यहाँ पर मैंने उसका ये भी दिया है, how to create the environment, how to create the project, create the environment, activate the environment. ठीक है, उसके बाद मैंने दिया है pip install django. ओके, आई जस्ट मेक सम चेंज, मुझे थोड़ा चेंज करना होगा यहाँ पर, मैं आपको बाद में चेंज करूँगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आप ये कर दीजिए। यू जस्ट फॉलो द स्टेप्स, pip इंस्टॉल django-admin, स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नेम डॉट python-py, startapp blog, register the app in setting.py. So everything I have created, just go through it, and the other URL, if you click on this you will get this URL, okay. So let us, I wish you all the best. Do share this video with others, okay, and we have created backend front end in the video. Thank you.